Assalamu alaikum, grade 7, both the Bitya and the Beta. I hope every one of you are hale and hearty, healthy and safe, and are disciplined to realize the significance of your academics. You are meticulous and diligent in your work, and may Allah gives you the best in this world and in the hereafter. So, who am I? Faiza Nadeem, your English teacher. You already know that. So, what we are going to do today, I'm going to tell you within a second. But for that, you'll have to come with me towards the board. Let's walk. G. My dearest children, what has the board explained? The board has explained that you must take out your Oxford Progressive Reader. ठीक है? Oxford Progressive Reader निकालो. हम करेंगे आज Unit 4. Unit 4 is about sugars and spices, यानी उसके different comprehensions हैं जो relate करते हैं या मीठे से या नमकीन मिर्ची वाला, right? और ये different comprehensions हम different time पे करते चले आए हैं. आज का जो स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन है वो है पेज नंबर 109 से पेज नंबर 113 तक, और इस कॉम्प्रिहेंशन का टाइटल है सिमनल केक. इंग्लैंड में बेटा दो तरह की कैटेगरीज होती हैं. एक होती थी लेडीज और एक होते थे पेजेंट्स. लेडीज वो होती थी जो रिच होती थी और उनके एक स्पेसिफिक हाई फाई मैनर्स और हाई फाई प्रोफाइल होता था, पढ़ी लिखी एजुकेटेड. और एक होता था बेटा पेजेंट्स. पेजेंट्स वो गरीब लोग होते थे जो पढ़ना लिखना या अफोर्ड नहीं कर सकते थे या उनके लिए फैसिलिटी मैसर नहीं थी, या जब मैसर थी तो वो उस स्टेटस की नहीं थी जिस स्टेटस की लेडीज की हुआ करती थी. तो जो पेजेंट गर्ल्स होती थी जब वो बड़ी हो जाती थी तो उनको डिफरेंट रिच घरों में भेज दिया जाता था टू डू द सर्विस. ठीक है, वो थोड़ा उधर काम करती थी, हेल्प आउट करती थी और लेडीज के साथ मैनर्स सीखती थी, काम काज सीखती थी, कढ़ाई बुनाई सीखती थी. और जब वो घर आती थी हर वीकेंड पे या हर फोर्टनाइट पे 15 दिन के बाद, तो उस स्पेसिफिक दिन को वो कहते थे मदरिंग डे. और ये स्पेसिफिक केक जो है ये फिर उनकी अम्मा उस मदरिंग डे पे अपनी बेटियों के लिए बनाया करती थी. इसके अलावा ये केक वो अपने ईस्टर्स पे भी बनाया करते थे. तो ये सिमनल केक वो स्पाइसी सा केक है जिसके अंदर डिफरेंट, स्पाइसी का मतलब मिर्ची नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट नट्स डले हुए हैं और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है. ये केक वो केक है जो उन ख़ास ओकेजन्स पे बनाया जाता है. जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मेट्रिक और इम्पीरियल मेजरमेंट्स में आपको फ़र्क पता हो. हमको पता है कि हम 4 अंडे लेते हैं, 250 ग्राम शुगर लेते हैं जब हम अपना केक बना रहे होते हैं. लेकिन इंग्लैंड में जो मेजरमेंट्स यूज़ होती हैं वो आउंसेस यूज़ होती हैं और 16 आउंस जो होता है वो इज इक्विवेलेंट टू 1 पाउंड होता है. ठीक है, 1 TSP इज़ 1 टेबल स्पून. अब ये टेबल स्पून लेवल्ड भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, लाइक थोड़ा सा हीप और हीप्ड भी हो सकता है, यानी भरा हुआ. ठीक है, in is an abbreviation of inches and we already know that 12 inches is equals to 1 foot. तो ये थी वो मेजरमेंट्स जो इस रेसिपी में यूज हुई हैं. अब जो नेक्स्ट आपका टास्क है वो टास्क आपसे कह रहा है कि राइट आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेकिंग सिमनल केक फॉर अ फ्रेंड हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, and you have to number your instructions and make everything clear. तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं, इसकी रेसिपी पढ़ते हैं और टास्क 1 के अकॉर्डिंग उसको फ्रेज आउट कर लेते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड विद मी. Alright, so if you will open your page number 110, you will find the ingredients of simnel cake written in it. ठीक है, आप इंग्रेडिएंट्स कैसे पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि 550 ग्राम्स और 1 pounds and 4 ounces of almond paste. आमंड में एल साइलेंट होता है, कभी भी आलमंड नहीं कहना. वो क्या है, बादाम. बादाम पीस के उसकी पेस्ट. 350 ग्राम्स या 12 ounce of currants. currants क्या होते हैं, बड़ी वाली किशमिश. 100 ग्राम्स और 4
ounces of sultanas. सुल्तानास भी किशमिश होती है, एक होता है मुनक्का और एक होती है किशमिश, राइट? तो ये दोनों जो हैं डिफरेंट, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ किशमिश हैं, तो ये दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ किशमिश इस स्पेसिफिक रेसिपी में यूज हो रहे हैं. 75 grams 3 ounces of mixed candied peel chopped. Candied peels यानी कि आपकी वो ऑरेंज रिंस और लेमन रिंस, जेस्ट, ये सब कुछ, ठीक है. 225 grams या 8 ounce of plain flour मैदा, pinch of salt चुटकी भर नमक, 5 milliliters या 1 level teaspoon ground cinnamon. cinnamon होती है दालचीनी यानी दालचीनी का पाउडर. 5 milliliter 1 level teaspoon ground nutmeg. nutmeg होती है जायफल, बड़ी ज़बरदस्ती उसकी खुशबू होती है, उसका पिसा हुआ पाउडर 1 level teaspoon. 175 grams या 6 ounces of butter. 175 grams या 6 ounces of castor sugar, पिसी हुई चीनी, 3 eggs beaten and milk to mix. Apricot jam or beaten egg to use under the almond paste. almond paste जब आप लगाएंगे तो उसके नीचे लगाने के लिए you can have either apricot jam or beaten egg. अंडा या जैम जो आपको easily available हो, जो आपको बेहतर लगे. Ingredients आप टास्क 1 में as it is लगा देंगे, ठीक है. रेसिपी जो यहाँ दी हुई है पेज नंबर 111 पे, उसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लेंगे ताकि आपकी फ्रेंड के लिए क्लैरिफाई हो जाए. सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्रीस एंड 18 सेंटीमीटर्स 7 inches cake tin. Divide the almond paste into 3. Take one portion and roll it out to around the same size as the cake tin. ये आपका नंबर 1 होगा आपका पॉइंट कि ग्रीस अ 18 सेंटीमीटर्स पैन. नंबर 2 आपका पॉइंट होगा divide your almond paste into 3 parts, ठीक है. 1 part should be rolled into to fit the inside of the cake tin. Next is in a mixing bowl, beat together the butter and sugar. Then add the eggs a little at a time. तो आप इसको यूँ लिख देंगे कि in a bowl, beat the butter and the sugar until the mixture becomes fluffy. Then add each egg one by one. Do not add the eggs at the same time, okay? Add eggs one by one. Mix in half the dried fruit and spices, then the flour. Mix in half of the currants and spices. कौन सी है आपकी? nutmeg और cinnamon, ठीक है. half of nutmeg and half of cinnamon. Then add flour. Then gradually add flour and do not mix it with a beater. Mix it with your hand. Finally, mix in the milk and the remaining dried fruit and spices. When you have added all the flour, you have mixed it properly, you have made the proper paste, then add the left of the spices, nutmeg and cinnamon and the currants and the kishmish raisins. Put half of the mixture into the prepared tin, smooth it flat and then cover with the round of almond paste. Put the remaining cake mixture on top. Bake in the oven at 170 degrees Celsius, 325 degrees Fahrenheit for about 1 hour. After 1 hour, lower the heat to 150 degrees, 300 degrees Fahrenheit and bake for 3 hours until the cake is golden brown and firm to the touch. Allow to cool in the tin. So you can write in this manner that spread the almond paste on the bottom of the tray, then pour half of the cake mixture on it, then spread another half of the almond paste and then on the top of it pour the cake mixture and bake it for 3 hours as it is described in the recipe. Take another third of the almond paste and roll it out to around the same size as the tin. Make small eggs from the remaining third. 11 is the traditional number. जो आपका थर्ड पार्ट, 2 पार्ट तो आपने लगा दिए केक में, जो आपका थर्ड पार्ट है उसको आपने पहले स्प्रेड किया, फ्लैट किया एंड देन यू मेक स्मॉल एग्स, छोटे छोटे राउंड सर्कल्स. 11 eggs is the traditional number. 11 small almond circles वो बनाते थे. Brush the top of the cake with apricot jam
or beaten egg, cover with a round of paste and place the small eggs round the edge. Brush the paste with any remaining egg or jam and brown under the grill. आपने उसको क्या करना है, केक जो आपका बन गया है उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगाना है या एग लगाना है. अपने जो आपने आमंड पेस्ट के एग्स लगाए थे वो रखने हैं, उनको भी आपने पीच जैम या फिर आपने एग्स के साथ कवर करना है और उसको ग्रिल कर देना है थोड़ी देर तक, जब तक कि वो ऊपर से ब्राउन ना हो जाए. टास्क 1 हमने कर लिया, रेसिपी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया. लेट्स मूव अहेड टू टास्क 2. टास्क 2 आपसे कह रहे हैं कि राइट अ रेसिपी ऑफ ए स्पाइस्ड फूड. What is it called and when is it eaten? Write your instructions clearly. अब ये जो स्पाइस फूड आपसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी खास ओकेजन पे आपके यहाँ कोई स्पाइसी फूड बनाया जाता है. तो बेटा हम तो बहुत सारे खाने बनाते हैं बहुत खास ओकेजन्स पे, दावतों पे भी और रेगुलर एवरीडे लाइफ में भी. तो लेट्स पिक आउट द रेसिपी दैट इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ एवरीवन एवरीवेयर. चिकन कढ़ाई. ठीक है, हम लिखते हैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी. तो हमारी जो रेसिपी का नाम है वो है चिकन कढ़ाई. अब ये हम कब बनाते हैं? ये हम खास तौर पे दावतों पे बनाते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ रहा हो तब बनाते हैं, या फिर संडेज वाले दिन जब सब घर में इकट्ठे हों तब बनाते हैं. तो हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेज द आंसर आउट? यू आर गोइंग टू राइट दैट द रेसिपी आई एम गोइंग टू make today is that of chicken karai. It is specially made for guests on special occasions or on those Sundays when everybody is at home. Right? इसके हम ingredients लिख लें. Chicken 1 kg. ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मरिक या हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया या कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon heaped जीरा पाउडर, 1 teaspoon heaped गरम मसाला, 1 teaspoon heaped ginger garlic paste, 1 tablespoon heaped tomatoes, 4 cut into cubes, yogurt, 1/4 cup, घी और oil half cup. ठीक है, and then you can have ginger, green chili and green coriander या जिसको आप धनिया कहते हो for garnishing. ये तो हो गई आपकी ingredients. अब रेसिपी लिख लें. क्लियर से हमने लिखना है, कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, कोई चीज़ मिस नहीं करनी. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि in a pan, and what did we miss? We missed the red chili powder. रेड चिली पाउडर लिखा ही नहीं, फीकी कढ़ाई बनानी थी. यहाँ लिख देते हैं रेड चिली, और वो कितना लेते हैं? 1 टीस्पून हीप्ड. ठीक है. इन अ पैन
add chicken, spices, all of them, ginger, garlic, and your curd, ghee with half cup of water. Next, let it simmer until water evaporates. Next is cook on medium flame. Add tomatoes. Cook until the tomatoes become tender. Garnish. Serve hot with a naan. और यू कैन हैव नान्स. ठीक है, चलो नान नहीं, पूरी 1 किलो कढ़ाई कैसे आप एक नान से खा सकते हो. ठीक है, तो हमने बनाई चिकन कढ़ाई. किस किस के मुंह में पानी आया है, किस किस को भूख लगी है? मुझे तो लग गई है. अभी जाके बनाऊंगी, अभी जाके खाऊंगी. आप भी अपनी मम्मास को कहो, बल्कि रादर यू हैव द रेसिपी, कुक इट योर ओन सेल्फ. राइट, सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. जी बेटा, ये है एक पोम. ठीक है, टेस्टिंग द लैंडस्केप. लैंडस्केप क्या होता है? पूरा का पूरा सीनरी, ग्राउंड. यानी आप कहीं जाओ और आप देखो कि घास उगी हुई है, दरख्त है, पौधे हैं, वो सब लैंडस्केप है. ये पोम लिखी हुई है मुनीसा अलवी ने. मुनीसा अलवी इज अ पर्सन हु इज लिविंग अब्रॉड, whose father was Pakistani but whose mother was not Pakistani. तो ये एक पाकिस्तानी कुजीन किसी स्पेशल डे पे उनके घर पक रही है, और उसकी खुशबू, उसका जायका और उसकी जो इफेक्ट था उसकी पर्सनालिटी पे जब वो बच्ची थी, उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है. Let's read the poem first and then we are going to do the comprehension question answers of this poem. The bottom of the pan was a pellet. Paprika, sayin and dhania. Sayin is also a spice. ठीक है, ऑरेंज से कलर की स्पाइस होती है वो. ठीक है, हल्दी heaped like powder panes. Melted ghee made lakes, golden rivers. The keema frying, my mother waited for the fat to bubble to the surface. मामा कहती है ना कि जब घी ऊपर आ जाएगा तो हांडी पक जाएगी, तो वो भी यही कह रही है कि अम्मा वेट कर रही थी कि घी आग के ऊपर बबल्स बनाए तो कीमा तैयार हो. फ्रेंड्स ब्रॉट सिल्वर लीफ. सिल्वर लीफ क्या है? ये सिल्वर वो चांदी के वर्क हैं जो हम मीठे पे लगाते हैं. आई ड्रॉप्ड इट ऑन खीर. हम खीर को KHEER से भी लिख सकते हैं. प्रॉपर नाउन्स कैन हैव एनी स्पेलिंग्स, राइट. स्पेशल राइस पुडिंग फॉर पार्टीज. ऑब्वियसली हमारे घर में भी ये ट्रेडिशन है कि खीर जो है ख़ास मौक़ों पे बनाई जाती है, ख़ास तौर पे मीठी ईद पे. आई टेस्टेड द लैंडस्केप कस्टम्स ऑफ माई फादर्स कंट्री. वो कीमे को कह रही है कि लैंडस्केप, उसके अंदर इतने डिफरेंट कलर्स हैं, वो इतना खूबसूरत है कि वो एक मुकम्मल तौर पे लैंडस्केप लग रहा है. और वो उसके बाप की कंट्री का, उसके नेटिव मुल्क का लैंडस्केप है. इट्स फीवर ऑन बाइटिंग अ चिली. और मुझे उसका बुखार, उसका टेंशन, मिर्ची खा के वो इफेक्ट आता है कि जैसे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ. राइट, सो दिस वाज द पोम एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. रीडिंग फॉर डिटेल एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है,
an artist mixes his colors on a palette. In what way does the bottom of the pan look like an artist's palette? If you will move on to the poem, you will say that in the bottom of the pan was a palette, paprika, sayin and dhania with haldi heaped like powder paints. तो आप इसके आंसर को यूं कंस्ट्रक्ट करेंगे, यूं फ्रेज आउट करेंगे that the colors of all the different spices used in the pan made the artist's color palette. Different spices थी, उनके different colors थे और वो पैन के अंदर जब डाले गए तो ऐसा लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट का जो पैलेट है जिसके अंदर वो रंग मिक्स करता है उसकी लुक आ रही है. What does the melted ghee look like to the poet when as a child she looks in the pan? The melted ghee looked like a river which is flowing. ठीक है, lakes और golden rivers. तो कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, the melted ghee looked like flowing lakes or golden rivers to the poet as a child when she looked at it. What does it mean when the poet says she tasted the landscape of her father's country? The poet means that she actually tasted the flavors of her father's country, and thus those flavors represent the different ethnics that were living in that specific country. Explain what the poet experienced about her father's country when she bit into a chili. She felt the fever, right? She felt the raise in adrenaline. She felt a hype, right? That is created inside her body when she flavored the chili. Apart from golden, there are no color names in this poem, but it is a very colorful poem, which words and phrases suggest the different colors to you. Let's move back to the poem, ठीक है? Paprika suggests red color, sayin suggests orange, dhania suggests yellow, golden yellow, haldi suggests mustard yellow, and then golden rivers are suggested. And then what is suggested? These are the colors. The chili is suggesting again red and green. So these are the names that are suggesting different colors used in the poem. Next question, write down one literal and one metaphorical statement from the poem and explain their meanings. एक metaphorical line तो ये हो गई. Melted ghee made lakes and golden rivers. It means that the ghee was flowing in the dish just like river flows. The mum put in ghee to bhunify the salan and the ghee was flowing inside the keema just like a golden river or lakes come down from the mountains. ये आपकी literal statement हो गई. Special rice pudding for parties. Like kheer is the special rice pudding that is made in order to be served in the specific Asian parties. Last question, what do you think were the feeling of the poet as a child? Well, we can say that the child was very excited to eat the native food of her father's native country. She wanted to eat everything. She just loved the colors, the texture, and the way the food was cooked and served. So she was excited on every step of this keema making and the rice pudding. So let's move on to the last topic of this specific unit. The last topic is that these are homophones, two sets of homophones, और आपने इसके sentences बनाने हैं. सबसे पहले हम ये क्लैरिफाई करें कि होमोफोन्स क्या होते हैं. होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी चेंज हो सकती है, मीनिंग भी चेंज हो सकती है, लेकिन उनका साउंड सेम होता है. जैसे ये चिली और ये चिली, या ये पैलेट या ये पैलेट. ठीक है, इनकी स्पेलिंग भी फ़र्क है, इनका मीनिंग भी फ़र्क है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. ये चिली होती है ठंड और ये चिली होती है मिर्च. इस चिली का सेंटेंस बना दें. It was very chilly outside, so I decided to wear another jacket. ठीक है, और ये chili, while tasting chili, I realized that it was too
hot for my flavor. ठीक है, ये पैलेट होता है आर्टिस्ट का वो प्लेट जिसके अंदर वो कलर्स मिक्स अप करता है, कलर्स आइडेंटिफाई करता है. तो ये वाला पैलेट कैसे होगा? ये वाला पैलेट ऐसे होगा that the artist brought in his palette and prepared to paint his picture by adding a number of shades of the red color. And this palette is the upper part of your mouth. ये जो आपकी teeth के पीछे आपके पास wall, that is called a palette. ठीक है, तो आप क्या कहोगे? The doctor found that my palate was being infected by the decay as well, so I had to undergo a surgery. Sentences बना दिए, homophones समझा दिए. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the simnel cake, the comprehension. ठीक है, उसकी रेसिपी पढ़ी, उसको फॉर्म किया टास्क 1 के लिए, टास्क 2 के लिए रेसिपी लिखी. एक और ट्रेडिशनल फूड जो ख़ास मौक़ों पे बनाया जाता है उसके रिलेटेड पोम पढ़ी, उसकी रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन और रीडिंग फॉर डिटेल की, और हमने होमोफोन्स किए, उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए. सब काम कंप्लीट करके रखना, राइट. इस कॉम्प्रिहेंशन को बहुत इंजॉय करना. 2 रेसिपीज़ हैं, बना के देखना. फ़ायज़ा नदीम को दुआओं में याद रखना, हंसते रहना, खेलते रहना, लेकिन अपने फ़राइज़ का ध्यान रखना. ठीक है, और लाजमी रब्बुल आलमीन से दुआ मांगना कि दुआ मांगना रब्बुल आलमीन का फेवरेट काम है. वो बहुत पसंद करता है जब उसका बंदा उससे दुआ मांगे. और दुआओं में मुझे, यहाँ पे रहने वाले सबको, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को मत भूलना. चलती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.